So hello everybody, welcome to my post office. Thank you very much for thousands and thousands of letters that you have written. हमने ये आपसे पूछा था, रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ डू राइट अस लेटर्स बिकॉज उसका एक अपना रोमांस है, एक एडमिरेशन और प्यार मोहब्बत जो लेटर्स के थ्रू होती है. That perhaps does not happen as well through an email, though email is fast and good too. So we wanted to get back to the time of yore and say, let's have letters from all of you. So I have been reading letters, hundreds of them. Some of them I've had to get read out by writing experts because some of the writing is even worse than mine. तो लेकिन मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ता रहूँगा. आप लेटर्स लिखते रहें. देखिए यहाँ पे इतने सारे गनी बैग्स हैं मेरे पास और ये कुछ ही हैं और भी बहुत सारे हमारे पास ऑफिस में पड़े हुए हैं. Lots and lots of them. So I've decided, let me read out some of the beautiful words and thoughts that you've written for me. First of all, I thank you all for all the love and goodness and the sweetness that you shower upon me and the film fan. But besides that, these 5-6 that I've chosen, मैं थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ के आपको सुनाता हूँ. And as time permits, we'll try and read as many as we can as time goes along. Keep bringing in your letters, sending in your letters. And here's the first one. So the first one is to Mr. Shah Rukh Khan, of course, a care of Yash Raj Films. और बाहर नाम नहीं है आपने लिखा, which is okay. We are not used to writing letters anymore. So मैं ये पढ़ता हूँ. फिर एंड में मालूम पड़ेगा ये लेटर किसका है. ओके, शुरू में मालूम पड़ गया. माय डियर शाहरुख खान, आई एम दरीना फ्रॉम मलेशिया. थैंक यू दरीना एंड थैंक यू एवरीवन इन मलेशिया फॉर लविंग मी सो मच. दिस इज वेरी स्वीट. आई एम द एडमिन ऑफ SRK यूनिवर्स मलेशिया. जस्ट सो यू नो, the one who asked you if you remember me during the second beam session in which you do. Okay. All right, Darina, I remember you. और मैं आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ क्योंकि बहुत लंबा लेटर है और ये दरीना की फोटोग्राफ भी है. when she had come and met me. This is Darina with me. और दिख रहा है दरीना आपको? Yeah. All right. You can zoom in later and check it after you make a picture of it. So thank you Darina, love you. यहाँ पे और मैं आपका लास्ट 4-5 लाइन्स पढ़ देता हूँ. दरीना की ने लिखा है, I performed Umrah in Feb 2016, mashallah. Allah bless you and didn't forget about you. Thank you for praying for me. I prayed earnestly for you and your family and that you be his guest too, inshallah. I will be with my children. Also get you something hopefully. I can hand it to you myself next time I see you. Lastly, always keep me in your heart. You're always in my heart, Darina. And please, जो तुम मेरे लिए लेकर आई हो, what you've got from me from Umrah, please give it to me. And love to you too for eternity. And thank you. This is very touching. And thank you for your prayers for my family and wishes for my family. So that was Darina from Malaysia. The first letter which I opened. And now for another letter. क्योंकि बहुत सारे letters हैं और मैं आहिस्ता आहिस्ता खोलता रहूँगा, लेकिन कुछ आज ही पढ़कर सुना देता हूँ. So this is the second letter. This one is again इनका जो नाम है थोड़ा सा मुश्किल है, मुझसे बोला नहीं जाएगा. So please forgive me if I say it wrong. Saranya Atputhanathan. Okay. Okay. If I just read out in English, it's Saranya Atputhanathan, but it is Atputhanathan from Colombo, Sri Lanka. Thank you, Saranya. मैं तुम्हें प्यार से अटपुटू बुलाता हूँ. So thank you, Atputu. And your letter has 2 parts. अरे, how beautiful is this, yaar. Thank you, Atputu. She's done a beautiful sketch of mine. Saranya. ये sketch है बहुत ही खूबसूरत, मेरी मूछ दाढ़ी वाला. So thank you very much. This is really, really sweet. I love you for doing this. And you're such a great artist. You are our own, very own personal Picasso now. So thank you, Saranya, from Colombo. और मैं आपका लेटर पढ़ के सुनाता हूँ. Out of the millions of fans across the world, me being a small or one fan of yours is so happy to get an opportunity to write this. Thank you very much for writing, actually, more than the opportunity to you. I love the pose of yours. It is so damn stunning. And no one can even do that or even try that pose. Absolutely. Nobody should try it. Never, ever. किसी की मजाल नहीं होनी चाहिए. Because that pose is just made for you. Yeah. वो मेरे लिए बनाया गया था. Made to order. It's patented now. I have all the movies you have chosen for you and you act your given role perfectly. Thank you. I never thought I would get a chance to write a letter for you and I love your acting in romance scenes. Best fighting skills, your walk, my smile, pose and dance, everything is best in you. Okay. So let's make this clear. You like everything about me. तो कोई individual चीज़ ऐसी है नहीं जो खराब है. I hope someday I'll get a chance to meet you. Inshallah, we will meet for sure, Saranya. And
Okay, she's made her name smaller here. Saranya Nathan. This is easier. और आखिर में लिखती है मुझको, thank you once again for this wonderful opportunity, waiting for reply, and there's a drawing attached for you. You'll be getting loads of letters hoping for a reply. So Saranya, yes, I will try and reply to them, but I will reply to them through video. I don't know if I'll be able to write, but I will inshallah try. One standard reply to everyone for writing so many letters, because this is really sweet for everyone to do this for fan and for me and for Yash Raj Films. So love you, Saranya, and inshallah we'll meet up soon next time I'm in Colombo, or if you come to India. Do watch the film. It's releasing on the 15th of April. Love you. और मेरे पास अब एक लेटर है, आज लेटर है क्रिश मुंबई से, और इन्होंने मुझको लिखा है, हाँ इनका छोटा सा लेटर है तो पूरा पढ़ के सुनाऊंगा. थैंक यू क्रिश फॉर राइटिंग. डियर सर, सर मत कहा करो यार, बड़ा शरीफ सा लगता है. I don't know on which scale of the fanometer I come on, but I know that you have been my biggest inspiration. I was a simple guy from Kolkata who lacked confidence. I got a job in Mumbai in 2004 and was lucky to meet you once the same year. Thank you, Krish. The day I met you, I started to believe that I can get whatever I want in my life, as that was a dream come true for me. Today I'm successful in my world, and you are the motivation. Thanks. It's a small world for you. Also, today I have a 1-month-old son, and he can say he's your दुनिया का सबसे बड़ा superstar का सबसे बड़े superstar का सबसे छोटा fan. Your fan Krish. Thank you, Krish. This is really sweet. I myself don't realize that the work that I do sometimes can touch lives like that. तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा क्रिश कि तुमने ऐसा सोचा कि मैं inspiration हूँ. But whatever the reason, as long as you're doing well, I pray for you, I pray for your family, and I pray for your little son. Please give him my love, give him a big hug from my side, and keep on working hard. And come and see Kolkata Knight Rider matches if you're there. Or next time when we are in Mumbai, we'll meet again. And I'd love to see your son next time when you get a chance to meet up with me. Thank you, Krish, and I'm happy I could be of help in life. God bless you, and thank you for writing. अब मेरे पास लेटर है फ्रॉम श्रीकांत कुमार साहू. श्रीकांत कुमार साहू, और ये लिख रहे हैं बुगड़ा, उड़ीसा से. थैंक यू श्रीकांत कि तुमने उड़ीसा से ये लेटर लिखा मुझको, और ये शॉर्ट एंड स्वीट है तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा. बट बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत. आपने लिखा है, डियर सर, थैंक्स फॉर ऑल द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन थ्रू योर मूवीज, स्पीचेस एंड वर्क. होप आई विल मीट यू वंस इन माई लाइफ. एब्सोल्युटली श्रीकांत, अगली बार मैं अगर उड़ीसा आया तो मिलूंगा आपसे. अगर आप कहीं मुंबई आए, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हम ज़रूर मिलेंगे श्रीकांत. और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये लेटर लिखा हमको, और मैं इस बात का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे समझते हैं मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, इंस्पायर कर सकता हूँ, और मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा ये कर सकता हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ कि आप जो भी करें ज़िंदगी में उसमें कामयाब हों. थैंक यू वेरी मच. दिस इज़ रियली स्वीट, एंड थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ राइटिंग. आई एम रीडिंग सम ऑफ द लेटर्स. I can't read all of them, but we'll continue this process and try and get as many in as we can. And once again, thank you, Shrikant. God bless you. Live long and be healthy. And now I have a letter from, okay, the name will be inside. There's no photo inside, but that's okay. Even if the photos are not there, I feel your love. ये letter है DG George से. DG George, I'm assuming would be a girl. Is DG a girl? Okay, DG is a girl. So she's written, Dear Shasa, let me begin with your dialogue which applies to my life quite perfectly. और उनका dialogue है, इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. Wow. One man's smile, one man's name always managed to make me smile since I was a 6-year-old. That man is you. Thank you for making me the man in your life since you were 6-year-old, DG. After years of anticipation, when I finally met you last year as a fan, your humility and sheer respect towards the people who loved you bowled me over even more. I was, am, and always will be proud to be your fan. Thank you once again, DG. This is very touching and very gentle. From just being a fan to now being a part of Team Fan in a significant yet minuscule way, I attribute this attitude of my career to you, this altitude of my career to you. Thank you for being a great actor and most importantly, the wonderful human being that you are, and for inspiring millions like me. I could write so much more, but words will fall short to encapsulate my feelings for you. I love and adore you. I love you and adore you too, DG. Thank you very much.
and this is DG's letter. बहुत बहुत धन्यवाद DG कि तुम मुझे इतना प्यार कर रही हो, इतना प्यार दे रही हो. And I would like to show all the letters that you have sent. But DG got randomly chosen because I'm reading letters जब मुझे time मिलता है, वक्त मिलता है. But we are reading all of them. So please keep sending them in. Thank you DG. I love you and look after yourself. And letter reading from me continues. मेरे पास है मीनल कोठारी, मोहाली, शिमला, राइट? या मीनल कोठारी फ्रॉम शिमला. एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भेजी हैं. अरे यार, लॉट्स ऑफ गुडीज़. थैंक यू मीनल. और ये तो बहुत ही खूबसूरत लेटर है यार, लवली. लेकिन तुमसे कम खूबसूरत है. तुम इस लेटर से ज़्यादा खूबसूरत हो मीनल. अलग अलग हिस्सों में बड़ी मेहनत से बनाया तुमने यार. ये देखो, ये मीनल है एंड में यहाँ पे. और इस लेटर्स के कुछ पार्ट्स मैं पढ़ लूँगा. पीछे इन्होंने बहुत स्वीटली फैन भी लिखा है. इट इज़ रियली हार्ड वर्क. मुझे भी ऐसे ही लेटर्स लिखकर भेजने चाहिए. सो पहले आई थिंक बहुत सारी फिल्मों का नाम लिखा है यहाँ पे मीनल ने. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर, DDLJ, दिल तो पागल है. फिर लिखा है येस्टरडे आई वाज योर फैन, टुडे आई एम योर फैन, टुमारो आई विल बी अ फैन, फॉरएवर आई विल बी योर फैन. सिंपल, स्वीट, कीप इट लाइक दैट मीनल, डोंट चेंज दैट. ये अच्छा है. आपको रिप्लाई करूँ तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ मीनल आपको. आप बहुत खूबसूरत हैं और प्लीज़ ऐसे ही खूबसूरत रहें, अच्छी बातें सोचें. और कभी ना कभी ज़िंदगी में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा. कभी मैं क्रिकेट के लिए आया वहाँ पे तो ज़रूर मिलूँगा आपसे. अगर किसी चीज़ को चाहो तो पूरे कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. एब्सोल्युटली. तो हम ज़रूर मिलेंगे. सर, ईगरली वेटिंग फॉर फैन. Every single word of fan anthem is so real. Thank you for liking it. And उसका श्रेय एक्चुअली पूरा विशाल शेखर और निकाश और वरुण ग्रोवर जिन्होंने वो लिखा है. एंड ऑफ कोर्स मनीष शर्मा एंड वैभवी जिन्होंने बहुत सोच के वो पूरा का पूरा एंथम भी लिखा है, अलग अलग भाषाओं में लिखा है. सो आई एम ग्लैड यू लाइक इट बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग डिजाइन्ड बाय वेरी वेरी स्पेशल पीपल. Eagerly waiting for fan. I like. Thank you so much for such a great film. And you know what? You are the right person for this movie. Thank you. It's my dream to meet you, to have a picture with you and to have your autograph. It's very less I've written, and the rest of the things I will meet you and say, of course, will not tell anyone. You can quietly meet me and tell me everything that you want to say, okay? हम सामने ऑटोग्राफ करेंगे, फिर बाद में चुपचाप से बैठ के बातें करेंगे. So thank you Meenal Kothari from Simla. God bless you. This is really pretty and one of the sweetest letters I've read. पीछे भी बहुत सब है. ब्लूटूथ से भी स्ट्रॉन्ग है कनेक्शन. हाँ, फिल्म के डायलॉग्स हैं सारे के सारे. सर, आप सिर्फ स्टार नहीं, दुनिया हो मेरी, आप भी दुनिया है मेरी मीनल. थैंक यू वेरी मच. These were just some of the letters that I've read today. और मैं कोशिश करता रहूँगा कि हमारे जो पूरी फ़ैन की टीम हेल्प कर रही है, पूरी PR की, और जो लगे हुए हैं बेचारे दिन रात ये लेटर्स पढ़ते हुए, वो मुझे बताते रहें so that I can read them out and मैं आपसे पर्सनली मुखातिब हो सकूँ ऐसा और बात कर सकूँ. So thank you very much. Keep sending in your letters. Love you all. And it's interesting actually. You know, you'll realize how little you use your pencils and pens in today's time of technology. It's very interesting to write. It's more personal. So love you for all the letters and inshallah, I'll see you when the film releases. Thank you very much.